ऑल इंडिया रैंक 1 इन IISER Aptitude टेस्ट आदर्श ने कंप्लीट किया है अपना BSc ऑनर्स फ्रॉम चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। आदर्श ने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, ना सिर्फ IIT बल्कि नेस्ट, जेईई मेंस, एडवांस्ड, CMI, NEET। Eventually I got 165 out of 180. केरला बोर्ड 100%, 11th और 12th दोनों कंबाइंड। हाँ क्योंकि एग्जाम देने के बाद हमें पता चलता है कि हमें कौन से टॉपिक में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ टाइम टेबल बताओ दैट सम प्रैक्टिकल थिंग्स जो बच्चे इंप्लीमेंट कर पाएं। ओके, key lesson that you can take from this video is treat every mock test as the actual exam itself. A very controversial or maybe important question जो हर बच्चा पूछता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। हाय एवरीवन, दिस इज़ आपके विवेक भैया, एलुमनस ऑफ नाइजर भुवनेश्वर, और आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, ऑल इंडिया रैंक 1 इन IISER एप्टीट्यूड टेस्ट फ्रॉम 2021, आदर्श वी। आदर्श अभी IISc बैंगलोर में नहीं है क्योंकि तब IISc बैंगलोर IIT से एडमिशन नहीं लेता था, बट अभी आदर्श ने कंप्लीट किया है अपना BSc ऑनर्स फ्रॉम चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट इन मैथ्स एंड फिजिक्स। आदर्श, कैसा लग रहा है वापस मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सालों बाद मिल रहे हैं तो अच्छा लगा मिलके। बाय द वे, आदर्श के बारे में हमें पता चला था व्हेन ही कॉल्ड अस, और प्रोबेबली हिज फादर कॉल्ड अस इन 2021। वी डिडंट नो कि वी हैव अ स्टूडेंट हु हैज गॉट ऑल इंडिया रैंक 1। वी हैड नो आइडिया कि हमारे स्टूडेंट का इतना अच्छा रैंक आया, सिलेक्शन आया। I think you or your father called us. I think you called us and you told us that you got all India rank 1. yeah, you got selected in IIT and all India rank 1, and we were so happy क्योंकि पहली बार हमें, मतलब कितना अच्छा लगता है यार। We never expected, we were just anyway guiding student because we wanted to do it. And it was your first year as well. हाँ, it was our first year of guiding student for IISER Aptitude test. Yeah, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। मैं भी थोड़ा सा नर्वस हूँ। एक तो मैं पॉडकास्ट ज़्यादा किया नहीं हूँ, दीज आर सम ऑफ द फर्स्ट पॉडकास्ट, एंड ऊपर से ऑल इंडिया रैंक 1 के सामने, ओ माय गॉड। एनीवे, आदर्श ने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, ना सिर्फ IIT बल्कि नेस्ट, जेईई मेंस, एडवांस्ड, CMI, NEET, राइट? तो आदर्श एक बार बताओ कौन कौन से रैंक्स आए हैं आपके? पहले तो IIT में ऑल इंडिया रैंक 1, नेस्ट में ऑल इंडिया रैंक 15, और जेईई मेंस में मेरा रैंक अराउंड 6000, जेईई एडवांस में अराउंड 4000, और डीट में 7000। तो आपको इंजीनियरिंग मिल जाता आराम से, बढ़िया IIT मिल जाता। नीट के लिए भी नीट से एम्स में मिल जाते? नहीं, एम्स शायद नहीं, पर एक मेडिकल कॉलेज मिल जाता गवर्नमेंट। अच्छा, विच वन? नियर बाय माय सिटी। अच्छा, बट क्यों नहीं गया इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रोफेशन में? क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद था और मैं मैथ्स में रिसर्च करना चाहता था, इसलिए मैथ्स पढ़ना चाहता था, रिसर्च ओरिएंटेड। हाँ, हेंस ही चोज CMI, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। मैथ्स तो बाकी जगह से भी हो सकती है, राइट? बट व्हाई CMI? So first of all, like I wanted to do it in a research-based institute. IITs, I don't think they are not that level in terms of research. So maybe IISc, IISER, CMI, and IISI are proper research institutes. So yeah, I got selected in CMI. I didn't qualify IISI, and yeah, and that year IISc did not take through IIT exam. And of course I got IISER Pune, but eventually I chose CMI. हाँ, so IISc तब एडमिशन नहीं लेता था IIT से, फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स IISc ने शुरू किया जब KVP अबॉलिश हुआ था। अदरवाइज आसानी से मिल जाता था वहाँ पे, आराम से, लाइक ऑब्वियसली फर्स्ट रैंक, राइट? बट नाउ यू आर प्लानिंग टू डू PhD फ्रॉम IISc बैंगलोर, इंटीग्रेटेड PhD। अभी हम लोग हाँ सुबह IISc में ही थे, साथ में हम लोग घूम रहे थे, पूरा कैंपस देख रहे थे। पहली बार तुम IISc भी आए हो, राइट? तो काफ़ी मज़ा आया। इस जो पूरी पॉडकास्ट है, हम बहुत फ्रेंडली डिस्कशन करेंगे। हम अपने स्टूडेंट्स, ऑडियंस और पेरेंट्स को एड्रेस करेंगे जो वो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में। तुमने कैसे प्रिपरेशन ली? ज़्यादातर लोग जो है ना, जो AIR 1 को इंस्पिरेशन मानते हैं। इट्स ड्रीम ऑफ ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट टू गेट सच अ रैंक एंड क्वालिफाई दीज tough national entrance exams. So we'll discuss about your journey. We'll discuss about what are the mistakes you might have made, what are the good things you did.
पेरेंट्स स्टूडेंट्स को कैसे बेनिफिट हो सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी वांट टू नो अबाउट योर जर्नी, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, व्हाई डिड यू चूज रिसर्च, what was your topic of projects and thesis maybe that you have done at CMI, right? CMI से BSc ऑनर्स कंप्लीट हो चुका है, राइट, इन मैथ्स एंड फिजिक्स, राइट. पहले तो ये बताओ कि जब सिलेक्शन हुआ था तुम्हारे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? जब CMI में सेलेक्ट हुआ था या फिर IIT में? ओवरऑल, क्योंकि इतने एग्जाम में सेलेक्ट हुए हो तो लाइक तो पहली बात तो मुझे CMI के बारे में मतलब उतना नहीं पता था कि मैं पहले से IISER पुणे जाना चाहता था. IISER पुणे या फिर अगर IISc मिल जाता तो ऑब्वियसली IISc, वरना IISER पुणे, ऐसा था मेरा. So afterwards I got selected in CMI, then I researched more about CMI, then I realized okay, CMI is maybe better than IISER Pune in terms of like for maths it's better. क्योंकि मुझे IISc नहीं मिला था तो CMI was the obvious choice, and parents were very happy after that. अच्छा, of course they will be happy. IISER पुणे IISc CMI के बारे में कैसे पता चला? IISER तो मैं मतलब पहले ही जानता था. IISER ट्रिवांड्रम में गया हूँ, KVPY SA स्ट्रीम का इंटरव्यू वहाँ पे था मेरा. अच्छा, IISER ट्रिवांड्रम बहुत अच्छा कैंपस है, मैं वहाँ पे गया हूँ. सो IISER के बारे में पता था. CMI ऑब्वियसली मुझे पता है क्योंकि माई मदर इज ऑल्सो मैथ्स टीचर, मैथ्स हाई सेकेंडरी लेवल टीचर, सो आई नो अबाउट CMI. एंड IISc ऑफ कोर्स एवरीवन विल नो, इट्स नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन इंडिया. हमारा एक स्टूडेंट था, वो अभी IISc में जो पढ़ रहा है, उसको नहीं पता था. हाँ, IISc के बारे में नहीं पता. IISc के बारे में नहीं पता था. वो IISER सोच रहा था, लेकिन IISc बाद में हमारे चैनल से पता चला उसे. एंड राइट नाउ ही इज़ इन IISc बैंगलोर. फिर हाउ डिड यू डिसाइड कि CMI नॉट IISERs, नॉट इंजीनियरिंग और मेडिकल? It was a tough decision. I'm sure parents must have questioned it. Yes, parents have questioned it. Yes, like engineering and or medicine, like both of them. I didn't like both of these areas. So definitely research was my interest. Then the question was about CMI, IISc or IISER Pune. So I didn't get selected in IISc. Then so IISER Pune versus CMI was the final, like 1v1 choice. So parents told me CMI will be very difficult to manage. So they were like, you could have gone to IISER Pune. You should have chosen there. But like one of my concern was that in IISER Pune you have to learn all the subjects, at least for the first 3 semesters, I guess. But in CMI, after the first semester itself, you will be majorly studying just maths. CMI डिफ़िकल्ट था? हाँ, डिफ़िकल्ट तो था ही, मतलब ऑब्वियसली. पर मतलब जितना भी डिफ़िकल्ट हो उससे मैंने ज़्यादा नॉलेज एक्वायर किया CMI से. मतलब थर्ड ईयर में ही लोग सारे इलेक्टिव्स लेते हैं, थर्ड ईयर सारे इलेक्टिव्स है, तो उससे मतलब MSc लेवल इलेक्टिव्स का पता चल जाता है थर्ड ईयर में ही. तो एक एडवांटेज है CMI का. डिफ़िकल्ट तो होगा ही क्योंकि MSc वाले के साथ ही हम कोर्स ले रहे हैं BSc वाले. तो एक तरह से बैचलर्स में ही मास्टर्स लेवल PhD लेवल के कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं. मास्टर्स लेवल प्रॉपर हो जाता है. अच्छा, बैचलर्स पे. हाँ, इसलिए मेरे बैच से कुछ लोग डायरेक्ट PhD के लिए जाते हैं. हाँ, मतलब 3 साल के BSc के बाद डायरेक्ट PhD के लिए. ऑसम. मोस्टली अब्रॉड ही जाते हैं. हाँ, अब्रॉड ही. राइट. ये बताओ, तुमने बताया रिसर्च में इंटरेस्ट था, राइट? वो कहाँ से आया, कब से पैदा हुआ? क्लास 8th में थे, 10th में थे, क्या कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट देख लिया, ओपन डे में चले गए? व्हाट वाज द रीज़न? ऐसा कोई मतलब स्पेसिफिक नहीं बता सकता, पर मतलब इन जनरल आई लाइक टू डू मैथ्स में मतलब प्रॉब्लम्स करना चाहता हूँ, मैथ्स के बारे में मतलब ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ना चाहता हूँ. तो इन जनरल आई लाइक टू स्टडी मैथ्स. तो मतलब मैं समझना चाहता हूँ वो मैथ्स में, क्योंकि बहुत लोग तो डरते हैं मैथ्स से, राइट? तो मे बी बिकॉज आपकी मम्मी मैथ्स टीचर थी, शुरू से मैथ्स पढ़ते आए, दैट वाज द रीज़न? I mean, that could be the reason. And also I went to an abacus course, like where you learn the math skills. So my calculations were very good from the beginning itself. और मैथ्स में पहले से इंटरेस्ट था और हमेशा मतलब फुल मार्क्स लाता था स्कूल. What is the best thing about maths? Maths, I think it's the least like it's a subject where you have to remember the least. That's one thing I like very much about it. Loving that feature. Yeah, because like the extreme opposite would be like biology. We have to learn a lot, like we have to मतलब रट्टा मारना पड़ता है सब कुछ. ऐसा नहीं है मैथ्स के बारे में. मतलब by the way, you were PCMB student, right? PCMB student, yeah. That is the reason that you could attempt almost all the examinations that were there. That is one of the reasons I tell the students to take PCMB,
ऑल 4 सब्जेक्ट्स, एंड आईआईटी में तो 4 सब्जेक्ट्स भी थे, है ना? वो भी एडवांटेज रहा होगा. सो प्रोबेबली द रीज़न बीइंग आपकी मम्मी मैथ्स टीचर थी, आपको शुरू से पसंद आया. एंड कब आपको लगा कि डिसाइड कर लिया कि अब तो मैथ्स में ही करियर बनाना है? तो मतलब शायद 10th में ही मैंने डिसाइड कर लिया, अराउंड 10th. क्योंकि मुझे पहले से ही मतलब मैथ्स के अलावा ज़्यादा मतलब मैकेनिकल, मतलब अगर इंजीनियर की बात कर रहे हो तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऐसे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ मैथ्स में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था. मैथ्स के बाद थोड़ा फिजिक्स में तो होता ही, मतलब बहुत इंटरसेक्शन है मैथ्स और फिजिक्स में. बाय द वे एक चीज़ हमने नहीं कवर किया, आप घर कहाँ है आपका, कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं केरला से बिलोंग करता हूँ, केरला में मालपुरम डिस्ट्रिक्ट. ओके. बचपन कैसा था? बचपन अच्छा गया, मतलब एक टाउन से 5 किलोमीटर दूर है, तो थोड़ा मतलब गांव वाला वाइब आता है. उतना भी टाउन में नहीं है मेरा घर, तो अच्छा गया बचपन. स्कूल में हमेशा से टॉपर थे? हाँ, हमेशा थे. ऑलवेज? हाँ, ऑलवेज. मतलब 9th में मेरा मुझे अभी भी याद है, 9th में मेरा फर्स्ट रैंक नहीं आया था क्लास में, सेकंड आया था. मैं उस दिन घर आके रोया उसके बारे में सोच के. 10th में फर्स्ट लाया मैंने. हाँ, स्कूल में. और फिर 11th-12th? 11 तो हाँ, 11-12 मतलब केरला बोर्ड था तो थोड़ा आसान है, तो फुल मार्क्स है मेरा. 100 आउट ऑफ? 600 लाइक नो 1200 आउट ऑफ 1200 अच्छा, टोटल. तो 100%? हाँ, केरला बोर्ड. केरला बोर्ड 100%, 11th और 12th दोनों? दोनों कंबाइंड. ओके. अच्छा, हाँ भाई साहब, 100 आउट ऑफ 100. नहीं, वो केरला बोर्ड थोड़ा आसान है. 10th में मेरा CBSE में था, तो मुझे शायद 488 मार्क्स मिला था 500 में से. मैथ्स में फुल मार्क्स 10th में. 12th के बाद ड्रॉप लिया या नहीं लिया, डायरेक्टली एडमिशन हो गया? राइट, सारे एग्जाम्स दिए. आइजर के बारे में पहले से पता था? प्रिपरेशन कहाँ से की आईआईटी एग्ज़ाम की? IIT एग्ज़ाम तो जर्नी शुरू होती है. मैं पहले नेक्स्ट एग्ज़ाम IIT से पहले था. तो नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद मैं श्योर नहीं था कि हो जाएगा या नहीं, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्या होता है, मतलब 4th सब्जेक्ट में भी आपको थोड़ा स्कोर करना पड़ता है, मिनिमम कट ऑफ चाहिए. उस टाइम पे था? हाँ, तो वो हट अभी गया है? नहीं है. अच्छा. तो मैं श्योर नहीं था, तो मैं सोचा अभी मतलब IIT तो देना ही है, IIT देना है. तो उसके बारे में मैंने IISER वर्सेस IISER कंपैरिजन सर्च करने लगा यूट्यूब पे. तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही चैनल था आपका, विवेक नाइसर, जो मतलब रेगुलरली अपडेट्स दे रहा था इसके बारे में, कंपैरिजन IISER में एडमिशन कैसे होते हैं, सब कुछ. तो ऐसे मैंने सब्सक्राइब कर लिया. और आप लोग का उस टाइम पर एक मॉक टेस्ट भी था, मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था आप लोगों ने. तो आई जॉइंड इट एंड या इट रियली हेल्प मी इन द प्रोसेस, like regarding how the question patterns were there. It's different from others, like exams like JEE Main or JEE Advanced. It's a bit high, the level is high, but like normally people prepare for JEE Main, NEET, right? So the question levels we can compare, but the question types are different in IIT. So the mock test really helped me understand how the questions. कुछ हेल्प हुआ था हमारे कोर्स से? हाँ, वही तो, मतलब क्वेश्चन पैटर्न, मतलब JEE मेन में तो मतलब ज़्यादा पैटर्न पेपर का पेपर अलग है, तो JEE मेन में ज़्यादातर कैलकुलेशंस होते हैं, क्वेश्चंस. ये सो व्हाट वाज द लोएस्ट मार्क दैट यू गॉट इन आवर मॉक टेस्ट? लोवेस्ट बहुत सारे मॉक टेस्ट थे ना, हम तो बहुत सारे करवाते हैं. मे बी अराउंड 100. उस टाइम पर तो 180 में था ना, 180 में 100. अच्छा. लोवेस्ट तो मैक्सिमम मेरा 120 हुआ था. 120? क्योंकि उतना टफ कराते थे तुम लोग पेपर. तो but eventually I got 165 out of 180 in the original 2021 exam. और सिर्फ एक क्वेश्चन ही गलत हुआ मतलब? नहीं, मतलब नहीं, तीन क्वेश्चन मैंने छोड़ा था और एक क्वेश्चन गलत हुआ. हाँ, 180 में से 15 कट गया, राइट? तो एक नेगेटिव हो गया और 2 छोड़ दिया. कैलकुलेशन अभी नहीं, शायद नहीं, तीन गलती हुई मुझसे और एक छोड़ दिया था. अच्छा. और कुछ रिपीट हुए थे मॉक टेस्ट थे हमारे क्वेश्चन? मतलब कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो रिपीट हुए थे, मतलब क्वेश्चंस एग्जैक्टली नहीं बता सकता. तुम भूल गए हो शायद. उस टाइम पे मतलब एग्जैक्ट रिपीट भी हुए थे. अच्छा. हाँ, तुम्ही ने बताया था शायद फीडबैक वीडियो में भी कि कुछ कॉन्सेप्ट जो पढ़ के गए थे मॉक टेस्ट के, 1-2 तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आए थे, क्योंकि कोविड था ना. 20 और 21 उस टाइम पे कोविड था. 12th पूरा कोविड में चला गया. कोविड का एक क्वेश्चन आकाश भाई ने प्रिपेयर किया था. अच्छा. एंड सिमिलर क्वेश्चन आया था. हाँ, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया था. तो 21 में नाउ जब सारे एग्ज़ाम हो गए, CMI चूज़ कर लिया. CMI
कि 3 साल कैसे थे? फर्स्ट ईयर तो पूरा ऑनलाइन था CMI में, तो स्ट्रगल हुआ अडाप्ट करने में। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में आया तो मतलब थोड़ा लैग बिहाइंड हो गया था, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑनलाइन था तो पता नहीं चलता, मतलब क्लासमेट से उतना डिस्कशन नहीं होता था। थर्ड सेमेस्टर इट वाज अ बिट स्ट्रगल फॉर मी। फिर फोर्थ सेमेस्टर में तो मुझे थोड़ा हेल्थ इशू भी हुआ था, तो मैंने ड्रॉप ले लिया, एक सेमेस्टर ड्रॉप किया मैंने। फिर मैंने फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ फिर कंटिन्यूस 3 सेमेस्टर लेके मैंने कोर्स ख़त्म कर दिया 3.5 साल में। कुछ आइडिया दो कैसे कोर्सेज होते हैं CMI में मैथ्स फिजिक्स के? मैथ्स फिजिक्स के अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात की जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर में 2 कोर्सेज होते हैं मैथ्स के, एक फिजिक्स, एक इंग्लिश, एक कंप्यूटर साइंस। और सेकंड सेमेस्टर के बाद आपको सेकंड सेमेस्टर में आपको फिजिक्स वर्सेस कंप्यूटर साइंस चुनना पड़ता है। तो मैंने तो मेजर जो मेजर मैथ्स ही है। मेजर तो मैथ्स ही है ना, मैथ विद फिजिक्स और या मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस था, तो सेकंड सेमेस्टर में वो मेजर माइनर नहीं कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैथ्स एंड फिजिक्स के बाद लोग फिजिक्स में PhD करने जाते हैं, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस के बाद कंप्यूटर साइंस में भी PhD करने जाते हैं। तो ऐसा मेजर माइनर नहीं कर सकते। BSc ऑनर्स और ये 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि मतलब थर्ड ईयर में तो पूरा इलेक्टिव होता है, तो इलेक्टिव हम लोग के मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। कभी प्लेसमेंट्स के बारे में, जॉब के बारे में ये सब सोचा? जॉब के बारे में तो नहीं सोचा, क्योंकि मैं तो हमेशा ज़िंदगी में यही करना, मतलब रिसर्च करना चाहता हूँ, मैथ्स ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ, तो मतलब जॉब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। तो हमेशा से रिसर्च करना था, मैथ्स में PhD करनी थी, ये सोचे? घर से कभी नहीं आया सवाल की? घर से मतलब कोई इशू नहीं था कि मतलब 25-26 से पहले जॉब होना चाहिए, ऐसा कुछ कोई कंडीशन नहीं था। तुम मतलब व्हाट एवर यू लाइक यू कैन डू, ऐसा था। दैट्स रियली ऑसम, राइट? लॉट ऑफ पीपल suffer with this expectation of the parents that you need to first of all crack the entrance exams, get the IITs or AIMS, and second, even after you get those, it's there's always the expectation of getting a job, right? And a good package, salary package. CMI से तो placement भी अच्छे होते हैं। हाँ, तो वो मास्टर्स के लिए होते हैं CMI प्लेसमेंट्स। बैचलर्स पे ज़्यादातर मतलब प्लेसमेंट यही होते हैं, मास्टर्स करने जाते हैं लोग बाहर अब्रॉड, और PhD के लिए भी जाते हैं। मास्टर्स तो CMI में भी कंटिन्यू हो सकता है? कंटिन्यू हो सकता है। तो 3 साल जो BSc कोर्स हुआ, 1 साल या 2 साल, कितने साल रहना होगा? एक्स्ट्रा 2 साल ही रहना। 2 साल का, और मास्टर्स हो जाएगा, राइट? एंड उसके बाद फिर कैसी कंपनियाँ आती हैं? नहीं, मैथ्स के लिए प्लेसमेंट सेल नहीं होता, मतलब मैथ्स सिर्फ कंप्यूटर साइंस और डाटा साइंस के लिए प्लेसमेंट्स होते हैं। अच्छा, और कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, एनी आइडिया? JPMC सुना होगा आपने, JP मॉर्गन, JP मॉर्गन चीज, बहुत सारे कंपनीज आते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स आते हैं, डेटा साइंस रोल्स के लिए डाटा साइंस के लिए बहुत सारे, वेल्स फार्गो सुना है, वो भी वो लोग भी आते हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी रिसर्च किया। श्रेयम बैनर्जी को जानते हो? सीनियर, मेरा सीनियर था, एक या 2 साल सीनियर था। हाँ, वो भी हमारे SciAstra में ही है, IISc CMI ही पढ़ा रहे हैं। तो मिले हो कभी उनसे? CMI के बाद नहीं मिला। अच्छा, CMI में मिले हो? अच्छा, कैसा है? अच्छा बंदा है, मतलब उतना मतलब बातचीत नहीं की मैंने उनसे। अच्छा, कितना डिफ़िकल्ट था CMI मैनेज करना? कैसा एग्ज़ाम प्रेशर था, या फिर पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर कर पा रहे थे? स्टूडेंट लाइफ कैसी थी? कैंपस कितना बड़ा था? कुछ बताओ। अगर आप कैंपस साइज देख के आ रहे हो तो मत आओ CMI में, यही बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ 5 एकर्स का है CMI, सो इट्स अ वेरी स्मॉल कैंपस, सो in that sense you won't have much campus life there, but the academics you will get there, it's very top notch. And about student life, like we only have one hostel, so it's very small campus, so and accordingly you will have very less number of cultural festivals like compared to other institutes like IISER and IISc. बैच में कितने लोग होंगे? अराउंड 50 लोग। अच्छा, और टोटल कैंपस में कितने लोग होंगे? 400 लोग शायद। अच्छा, 400 के आसपास ही होगा। इसलिए भी लोग कम होते हैं ना, तो उतना इवेंट्स भी कम ही होता है, फिर ऑर्गेनाइज करना इतना हेक्टिक होता है। प्रोफेसर्स कैसे हैं, उनके बारे में बताओ। प्रोफेसर्स अच्छे, मतलब वेरी क्वालिफाइड, देयर आर अ लॉट ऑफ वेरी क्वालिफाइड प्रोफेसर्स who have done PhD from abroad. And some of the professors have even studied in CMI, did their PhDs abroad, and came back to CMI to teach. And a lot of in very different areas also.
जैसे कोई renowned professor, very famous professor, what are the theorems they have worked on? Maybe they have met some very reputed scientists, maybe Nobel laureates also, right? Like I think there are three professors in CMI who has won the Bhatnagar Award. Okay. It's called Santi Swarup Bhatnagar. Bhatnagar Yeah, Award. that yeah. Hmm. And T.R. Ramdas, Karandikar sir, then Vikram Balaji. The three people have won this Bhatnagar. What are some of the specific areas in maths जो आपको पसंद है? मुझे इन जनरल अलजेब्रा और नंबर थ्योरी दोनों में इंटरेस्ट है. तो मैंने मतलब एग्जैक्टली नहीं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ. मतलब जिसमें मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट है उसी में जाना चाहता हूँ. पीएचडी के लिए तो सोचना पड़ेगा कौन सा मतलब एक्चुअली में इंटरेस्ट है. मैथ्स काफ़ी हेल्प करता है लाइक टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, राइट? इट्स लिटरली द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. मैथ इज लाइक द maybe something that we can use to maybe solve this equation of matrix. What is this world really about? The dimension, right? The one thing a lot of people get confused with is the dimensions in real life and dimensions in maths, right? Those are very different, correct? Or are they same? I mean, the dimension, if you talk about the space, it will be 3-dimensional. If you had a time, that we can call it 4-dimensional. 4 dimension. But in maths, we have matrices where we deal about like any n-dimensional things. Maybe infinite dimensional spaces also we deal about. And these are very helpful in physics. Mostly in physics and other applied areas. So what are those interesting things that actually push mathematics or physics research that are being done at CMI? Like specifically about maths and physics? Or maybe in general you can tell what are some of the things pushing the research R&D in maths and physics. For maths, I don't know, like maths as such, the theoretical mathematics, I don't think it will have like effects on the society as it is, but it will affect other subjects like applied mathematics, like statistics, probability, and determining different things in India. Then in physics, obviously a lot of mathematics required. Like I went ahead and take like we had core courses in physics, so QM1 and QM2, but it was like mostly mathematical calculation, mathematical symbols everywhere. So a lot of maths is required in physics, so which obviously makes it very 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 important. Some of the very basic things that people take for granted, for example 1 + 1 = 2. Some of my maths professors told that it's not that simple. The proof of 1 + 1 = 2 is very long, right? So do you have more such examples that we in general take for granted but are like very important in maths and maybe require, they're not so simple, they require proofs and those are very complex? You can talk about 1 + 1 = 2 maybe if you have thought about it. Maybe okay, I'll tell about like we know pi is an irrational number. Right, pi is a rational number. It's also a transcendental number. Transcendental number is a number which cannot be a root of a quadratic equation with rational coefficients. Sorry, a polynomial equation with rational coefficients. Okay. So this thing is like we can easily say it, okay, pi is transcendental, but the proof is very long. It's very difficult to prove that pi is transcendental. So these kind of things, you can have some simple statements, but it can take pages long to prove it. What kind of books you have read at CMI? Like for the courses. Okay, one of the in general. One of the basic books for if you want to learn algebra is like one of the most renowned books. No, it's for topology. Okay, most for topology. That we had read at NEET. Okay, this is Artin, book by Artin, algebra. It's like it has almost everything. Like you can have like you can split it into 3 or 4 courses. The entire book. It's a very long. It's very fundamental book. How was your campus life at CMI? Okay, what did you do at CMI? Okay, mostly studying? Yeah. I mean, you won't have that much free time like if you are very serious about studies. I mean, not because they're like the classes are too long or classes are too much, but you have to study like you have to study in order to
I mean, in order to complete the syllabus and keep track of it. There won't be that much assignments, but you have to do a lot of self-study. So in your batch there are about 50 people, right? Yeah. How many girls? Only 5. 5 girls. So ratio is really bad. Yeah. Huh? ठीक है. Then what did you guys do on Valentine's? I don't think there is any such thing when there's a celebration on Valentine's. Just like a normal day. Okay. Nothing special on that day. Tell us some cool facts about CMI and maybe the student life there. Cool fact. Okay. Have you seen like a basketball court with a single basket, only half of a court? Ever? No. Then come to CMI. You have a half basketball court there. Why? I mean, I told you already. It's a very small campus. So half court. Yeah, half court. Because there are not even enough players to play I mean, the I game. don't, not about the players, but yeah. Even if campus is small, the court can be complete, right? I mean, still, I would say like there are some people who used to play. No, some people who play basketball, but not so much because people are mostly into studies. So libraries are open 24/7, except for like 1 hour every day where they clean the library. So people are allowed to stay there overnight. Yeah, some people even sleep in libraries. Acha, you slept in library? No. I value my sleep time very much. So okay. How many hours do you sleep in general? I try to get 7 hours. Yeah, so at least 5.5, 6 hours every day. Okay, what is your plan after BSc? So right now I am writing entrance exams for integrated PhD and master's admission. So I have not yet decided whether I wanted to do a master's or go for integrated PhD in India. So yeah, right now these are my plans. Let's get back to the entrance exam story. The preparation phase for the exams. Right now we know the results, you got really good ranks and selections, but जब selection नहीं होता, you're preparing so hard, इतना सारा syllabus होता है, इतना vast syllabus होता है, कम time होता है, especially during the end time of the preparation, बस 2-3 महीने बचते हैं, right? Backlog एक बड़ा समस्या होता है, revision नहीं कर पाते लोग. So what were some of the difficulties that you faced for entrance exam preparation? So talking about difficulty in general or about IIT exam? In general. Okay, in general, okay, in that year 2021, I remember that was the one year where we had 4 JEE mains. मतलब 21 साल ऐसा मतलब 4 बार कराएगा JEE mains. तो मतलब JEE mains मेरे लिए एक मॉक टेस्ट की तरह की था, मतलब बार बार दे देते थे, तो मतलब प्रैक्टिस हो जाता है उससे, तो it was very nice experience. So I think I strongly believe that you will learn more from your mistakes than you will you'll learn from not doing or not attempting it. So इसीलिए मतलब आपको पहले ही मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिविजन कर लेना चाहिए. उसके बाद मॉक टेस्ट देते रहो, उससे मतलब अपनी गलतियों के बारे में पता चलेगा और ज़्यादा ध्यान दे पाएगा. कभी ऐसा हुआ कि सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, बैकलॉग्स हो गए, कभी बने बैकलॉग? हाँ, मतलब फर्स्ट लाइक I think the exams started around like January itself, so it's very difficult to complete the topic by January. So at that time I was like देखते हैं क्या होता है, जितना स्कोर कर सकते हैं देखते हैं. मतलब बहुत बच्चों को मतलब सिलेबस पूरा नहीं हुआ होगा उस टाइम पे, तो अच्छा है. तो उसके बाद मतलब मार्च में हुआ था दूसरा JEE मेन शायद, तो ज़्यादा प्रिपरेशन हो गया, तो बार बार ऐसे मतलब रिविज़न करता था मैं एग्ज़ाम से पहले, तो रिविज़न ज़्यादा हो जाता है उससे, तो उससे मतलब ज़्यादा याद रह जाता है. तो तुम्हारा भी सिलेबस पूरा ख़त्म नहीं हुआ था फर्स्ट JEE मेंस पे, बट एग्ज़ाम दिया, राइट? तो ये बच्चों के लिए मैसेज है कि इतना ये नहीं कि एग्ज़ाम ही छोड़ दो. नहीं ऐसा नहीं है ना, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद हमें पता चलता है कि हमें कौन से टॉपिक में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सा टॉपिक हमारे वीक है, कौन सा टॉपिक है हम मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं किए, तो ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे उसके बारे में टॉपिक में. JEE मेंस हो गया, फिर तो नीट भी थे और बाकी एग्ज़ाम्स भी थे. बैकलॉग हमने डिस्कस कर लिया. रिवीजन का क्या करते थे? एंड एज यू सेड मैथ में कम याद करना पड़ता है, तो बाकी जगह तो काफ़ी मुश्किल हुई होगी बाकी सब्जेक्ट्स में. लाइक ऑफ कोर्स लाइक बायोलॉजी में तो ये आई थिंक वन थिंग आई लाइक अबाउट IIT एग्जाम इज़ दैट इट्स नॉट लाइक नीट में मतलब आपको बहुत कुछ याद करना पड़ता है बायोलॉजी में. तो पर इन IIT यू विल हैव सम रिसर्च लेवल क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू लाइक जस्ट मेमोराइज एवरीथिंग एंड गो.
That's very helpful in IIT. So, and biology, then chemistry was the another subject which I faced most difficulty because you have to remember a lot. केमिस्ट्री में कहाँ दिक्कत आई थी? ऑर्गेनिक? Inorganic chemistry. बहुत कुछ Inorganic. याद करना पड़ता है. तो कैसे याद किया जब इतना मुश्किल होता है? यही मतलब रिवीजन मतलब just give as many exams as you want. That's कुछ टाइम टेबल बताओ, दैट सम प्रैक्टिकल थिंग्स जो बच्चे इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपने लिए, कि हर रात को सोने से पहले पढ़ना, या मे बी यू हैड अ शेड्यूल कि हर सैटरडे संडे रिवाइज करेंगे. व्हाट वाज योर रूटीन लाइक? Okay, I'm not someone who like sticks to one schedule, so I always try to make a lot of schedules. Like I will do this, then afternoon I will study this. But sometimes it works, sometimes it only works for 2-3 days. Then I think the best schedule is whatever fits you, and the best time to study is when you feel very motivated. But one more thing, it doesn't mean that you study only at the night, but because it can affect your exams. So क्योंकि मतलब एग्जाम्स सुबह होते हैं तो मतलब नींद पूरी नहीं होती है तो एग्जाम्स में दिक्कत हो जाता है. सो यू आर सेइंग कि एक पर्टिकुलर टाइम टेबल तो फॉलो नहीं करते थे? Yeah, you just want the motivation to like complete as much topics, not just before an exam, like the final exam, before any mock test. Like you should be like, okay, tomorrow I have mock test, I will cover as much topics as I can right now, so that I can attempt the mock test itself very seriously. Like by attempting the mock test seriously, it doesn't just mean that you have to sit in one corner and be very concentrated while writing the exam. You have to be treating it as an exam before the exam itself. You should be studying everything. So I mean, at least it will be a revision for you. It will help you in the future. So you for the used real to exam. treat every mock test like an actual exam? Like seriously, in the sense, I tried to cover a lot of topics beforehand itself. अच्छा. Like I think many students were like, I haven't done enough preparation, so I won't be giving the mock test. No, you shouldn't do that. You should never even think about it. Okay, but a lot of students think that their syllabus is not complete. क्वेश्चन करेंगे मॉक टेस्ट में तो होंगे नहीं, सॉल्व नहीं होते ना. मतलब जितना कर सको उतना अच्छा है आपके लिए. कम से कम रिवीजन तो हो जाएगा. लेकिन स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में जैसे 10-15 मॉक टेस्ट है, 2-3 महीने नहीं दिए तो बैकलॉग बन गया, इकट्ठा हो गया, वो एक्स्ट्रा मेंटल प्रेशर भी देगा. फिर एक और बात है, अगर आप मॉक टेस्ट मतलब नहीं देगा तो ये होता है कि आपको लगेगा कि आपका अपना टॉपिक्स कंप्लीट पूरा हो गया. पर मॉक टेस्ट देने के बाद पता चलेगा हाँ ये मुझे याद नहीं है, ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस ज़्यादा सोल्व नहीं किए इस टॉपिक से. तो यू शुड गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट. तो बेसिकली एक इल्यूजन में रहोगे, मॉक टेस्ट दोगे नहीं, बस हाँ पढ़ के थियरी, और एग्जाम में तो क्वेश्चंस ही आने हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है, जो शेड्यूल की तुमने बात की, पहले हम इसको कवर कर लेते हैं कि कोई फिक्स रूटीन नहीं था, एंड जब भी मोटिवेशन आता था आप करते थे अच्छे से. जब डिमोटिवेटेड फील करते थे, क्वेश्चन नहीं होते थे या याद नहीं होता था केमिस्ट्री बायोलॉजी, तब क्या करते थे? जब इंसान डिमोटिवेट तो हो ही जाता है आदमी इतने साल के प्रिपरेशन में. Okay, अगर मतलब when I get demotivated, the first thing you should do is like take a break for like half a day, 1 day maybe maximum. Then the next day you will wake up as another person. You might forget how you felt the day before, so it's better. And one thing I always used to do is that as soon as the solutions of the mock test come, I always check whatever I made mistakes. Then I remember, okay, I have made this mistake, I haven't studied this properly, or I'm not able to do the questions even though I know the concept. So you just don't give the exam mock test. You just have to go through your answers, find your mistakes, evaluate it, then जितना जल्दी हो सके मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस कर लो. राइट, कितने घंटे एनालिसिस में लगाते थे? मैक्सिमम लाइक 1-2 घंटे काफ़ी है. मतलब टॉपिक्स आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. तो आफ्टर दैट द नेक्स्ट वीक और समथिंग लाइक बिफोर द नेक्स्ट मॉक टेस्ट आई विल बी स्टडीइंग मोस्ट ऑफ दैट टॉपिक. सो दैट वे यू कैन गेट बेटर. बुरा नहीं लगता था जब क्वेश्चन नहीं आते थे या नेगेटिव हो जाते थे? बुरा तो लगता है, मतलब स्पेशली व्हेन यू गेट अ लॉट ऑफ नेगेटिव्स, क्योंकि मतलब जितने मार्क्स आपको मिले उससे भी कम जा रहे हैं ना अभी नेगेटिव मिलता है. तो ऑब्वियसली यू जस्ट हैव टू गेट बेटर एवरी टाइम. नेगेटिव मार्क्स कैसे कम किए? Just through practice and practice I would say, because at first you'll be like, okay, there's a like 50-50 chance of getting correct, I'll just mark it. मतलब जितना हो सके मतलब देखते हैं क्या होता है, ऐसा मूड में रहते हैं आप पहले मॉक टेस्ट देते हो. उसके बाद आपको पता चलता है हाँ ये ज़्यादा रिस्की है क्वेश्चन, तो नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, या फिर बाद में जाके देखते हैं क्वेश्चन को, ऐसे सोचते हैं. तो
through practice you will get to know about it. सो जो क्वेश्चन मुश्किल लगे या ऐसा लगे नेगेटिव हो जाएगा उसको सेकेंड राउंड में आके कर दो या फिर छोड़ दो, राइट? Don't just attempt it blindly. Like there's a 25% of chance of getting it correct, so I'll just mark anything now. Don't do it. Like just think of attempting even like if you have like at least 50% chance, like it's either option A or option D, then you can think and then attempt. Still don't just attempt one of those blindly. करेक्ट. सो रूटीन एज सच था नहीं, बट कई लोग ये होता है ना, तुमने बताया कि मोटिवेशन हो तो पढ़ो, मोटिवेशन होता ही नहीं पढ़ाई का, पढ़ाई ही नहीं होती, पढ़ने का मन ही नहीं होता. तुम तो बचपन से टॉपर रहे हो. जिन लोगों को पढ़ाई पसंद नहीं वो तो यही सोचना चाहिए कि अगर आपको ये रैंक मिल जाता तो आपका फ्यूचर क्या कैसा रहेगा, वो जस्ट इमेजिन करके देखो, तो उसी से आपको मोटिवेशन मिल जाना चाहिए. व्हाट विल बी योर फ्यूचर इफ़ आई प्रिपेयर वेल. सो आपको अभी से शुरू करना चाहिए. कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. वाह वाह, क्या बात. कभी ऐसा हुआ है कि यू प्लान समथिंग कि ये टॉपिक ये चैप्टर पढ़ूंगा बट पढ़ नहीं पाया, या ऐसा हुआ कि यूट्यूब गए मोटिवेशनल वीडियो देखने या वीडियो देखने, या कभी देखा यूट्यूब वगैरह में कभी फंसे हो तुम प्रिपरेशन के दौरान? मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए या फिर कई लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या यूट्यूब या रील्स, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया एडिक्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना. बहुत गंदी आदत है ये, क्योंकि मतलब आफ्टर सम टाइम यू जस्ट गेट एडिक्टेड टू मोटिवेशन रील्स. आफ्टर लाइक द थिंग इज दैट when you watch a motivation reel, your dopamine level increases. You'll feel like okay, you have achieved. Your brain convinces you that you have achieved because the dopamine is released. But the real dopamine, the real happy hormones will be released when you attempt a task by your own. You study a topic which you have been leaving it for some time. So social media का स्ट्रगल नहीं रहा कभी? Like 11th-12 में तो मेरे पास मतलब खुद का फ़ोन नहीं था. अच्छा, तो कोई भी फ़ोन नहीं था? एक छोटा सा मतलब कीपैड. अच्छा. So would you recommend that? For 11th-12 maybe, like then afterwards you have to have a phone. So maybe as long as you can, don't use smartphone. At least stay away from these reels and जो लोग फ़ोन में ही पढ़ाई करते हैं तो कम से कम ये इंस्टाग्राम रील्स वगैरह ना देखें, ज़्यादा एडिक्टिव है. You should know that the real happiness you will get is not from watching the videos. Just try this one thing. Like if you are like postponing a topic, so suppose you are thinking about studying this topic for a very long time and you haven't even started it, then you go and watch a lot of motivational videos. It will only give you temporary dopamine release. But instead try to finish that topic. After that you will feel very happy. So that's the very happy moment that will in fact make you motivated. लास्ट के जो 2-3 महीने बचते हैं एग्ज़ाम के, तब क्या करना चाहिए? पहली बात तो अगर लास्ट 1 महीने तो सिर्फ मॉक टेस्ट में देना चाहिए. उसके पहले सारे रिविजन खत्म होना चाहिए ऑलमोस्ट. लाइक कम से कम एक बार तो रिविजन होना ही चाहिए लास्ट के 1 महीने से पहले. हाँ, और 2-3 महीने फिर मॉक टेस्ट ही दें? नहीं, 2-3 महीने, लास्ट के 1 महीने कम से कम सिर्फ मॉक टेस्ट. सिर्फ मॉक टेस्ट यही होता है, मतलब ज़्यादा रिविजन करने से ज़्यादा याद रह जाता है. So that's why I am telling, like you have to take every mock test seriously. That's in the sense you have to study seriously for the mock test. Like study seriously for the mock test itself. Like even if you don't get very good marks in mock test, at least you have gone through that topic once. You don't need that much time to go through that topic again. So it's a win-win situation anyways. If you score well in mock test, okay, it's good. Even if you don't score well, you have gone through that topic seriously once. I think one of the biggest, the key lesson that you can take from this video is कि treat every mock test as the actual exam itself. Yeah. You will be serious about it. पूरा पढ़ लोगे अच्छे से, गलती होगी तो सीखोगे भी. How many mock tests did you give in total for IIT examination? IIT, I think 6 or 7, I guess. 6-7 mock tests. I think one thing which helped me like in the IIT preparation, I think it was the exam was in September at that time, 2021. Yeah, and I was giving JEE mains from January itself. I gave JEE main 4 times. Then we had other exams like CMI, IISc just for max. Then I think I gave NEET also before IIT, and I also gave KVPY, which I had studied biology for.
So these are like in fact kind of revision for you, right? Like you have to take every exam serious, like not like okay, I'll just go and see what happens with the exam. No, just take every exam seriously. So एंड कितने बार रिवाइज किया था तुमने पूरा सिलेबस 11th 12th? तो मुझे याद ही नहीं मतलब कितने बार रिविजन करने की बात नहीं है, मतलब अगर इफ़ यू हैव सम टॉपिक्स योर वीक पॉइंट्स, यू हैव टू रिवाइज दैट टॉपिक अ लॉट टू कीप इट इन द सेम लेवल. तुमने बताया कि हर मॉक टेस्ट को सीरियसली लो एग्जाम की तरह. मॉक टेस्ट दिया, 15 नंबर आए, 20 नंबर आए, किसी के तो -3 नंबर्स भी आए, तब क्या करे, कैसे सीरियसली ले ले? वो तो बेचारा परेशान हो जाता है वो बच्चा. I think he's talking about students you who hasn't even like revised it once. Then that's the only way you can get negative marks again. So again, right now it's like only March, so you have some time to revise and give the mock test. So the more you revise, the more you will score in mock test, and eventually the marks will increase. So at the beginning, if you get very low marks, you should ask yourself like, have you revised the topic once? Like if you get very low marks, then there's no point in which topics are weak, right? You haven't even revised every topic, then you just can't go like, well, this topic is weak, this topic is weak. So just have to revise. A very controversial or maybe important question जो हर बच्चा पूछता है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तुमने तो बहुत सारे टीचर्स भी देखा होगा, स्टडी 15 आवर्स 20 आवर्स. मतलब किसी से नहीं होता, मतलब मैक्सिमम 1-2 दिन के लिए चलता है, उसके बाद शटडाउन हो जाता है बॉडी. सो द बेस्ट थिंग, देखो आदर्श ने जेईई मेंस, नीट, आईआईटी, नेस्ट, सीएमआई सारे एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं. आदर्श बताएगा कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स टीचर्स बोलते हैं 15 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो. स्पेशली नीट एग्ज़ाम के जो टीचर्स होते हैं वो तो और ज़्यादा बोलते हैं कि रट लो, एनसीईआरटी रट लो, घोल के पी जाओ, ऐसा बोलते हैं. Okay, I'm telling this from my experience. Like it's not about how much hours you study, it's about how deeply you understand the subject. Like because sometimes you're like, okay, I will finish this topic in one day itself. You might even go through all the topics like that topic in one day, but you will forget it within 1 week. तो उसका फ़ायदा क्या? तो if you like spend instead of learning that topic in one day, just learn bit by bit every day some part of it. You understand it very thoroughly. पहले थ्योरम वगैरह समझ लिया, टॉपिक्स जो भी है, कंसेप्ट, उसके बाद प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लिया, तो मतलब उसके बाद ज़्यादा रिविजन देना नहीं पड़ेगा उस टॉपिक पे. That's the most important part. Otherwise you will be like, oh, I have to finish this topic, I will finish this thing today, next week मतलब 2 हफ्ते बाद फिर से भूल जाओगे वो वही टॉपिक. तो उसी चक्कर में इसी लूप में चले जाएगा. तो बट ये तो कभी इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, क्योंकि जब भी पढ़ लो 1-2 हफ्ते में भूल ही जाता है, 1 महीने में, तब क्या करें? I mean that's the thing, like I mean don't just rush it. You shouldn't be like, okay, I have 2 chapters left, I will complete these 2 chapters in 2-3 days. Just take bit by bit. Okay, I will understand this topic first. Okay, I understood topic. Next I will do some problems. Okay, I have done problems. Maybe if you have time, like then just go through the previous year questions or whatever exams you are attempting. And so this way you are learning through like many times, going through the topic many times. And one more thing I think which I didn't do very well at that time, but I think it should be helpful, is that you should write everything what you learn. For maths you have to write, you do the calculations. For topics like biology, like you have to learn a lot, you have to memorize a lot. So like you have to note down the points. Okay, you saw some statement in biology, so you feel like, okay, this is very interesting, but you might forget. So just write down that statement. So इससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा याद रह जाता है. आप खुद से मतलब अपने हाथ से लिख रहे हैं ना, तो एक और मोड ऑफ लर्निंग हो जाता है. देख लिया, अगर वीडियो देखोगे तो सुन लिया, लिख भी लिया सेम टॉपिक, तो अनदर मोड ऑफ लर्निंग इज इंट्रोड्यूस्ड. नोट्स बनाना कितना ज़रूरी है? यू मेड नोट्स? I made some notes for the biology, but biology, like you have to memorize a lot, but it's not possible. For topics which require memorization, notes is needed. पर मतलब नोट्स भी ऐसे नहीं कि मतलब क्लास वहाँ पे चल रहा है, अब मैंने ऐसे ही नोट्स बना लिए, ऐसा नहीं. यू हैव टू थिंक अबाउट, ओके दिस स्टेटमेंट इज नाइस, यू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, तो उससे ज़्यादा याद रह जाता है टॉपिक्स. नोट्स तो सब बनाते हो क्लास में, तो ऐसे ही मतलब बोर्ड पे लिखा हुआ होता है, ऐसे ही कॉपी कर देते हैं बिना सोचे समझे. ऐसा नहीं करना है.
ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसा तुमने बताया कि ये सोचो कि क्या रैंक आएगी तो क्या लाइफ होगा, सिलेक्शन होगा, दैट एज अ मोटिवेशन सोर्स, राइट? जब भी डीमोटिवेट फील करो, सोचो कि इफ़ यू क्वालिफाई द एग्ज़ाम क्या होगा। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उस एग्ज़ाम को ही सब कुछ बना लेते हैं, राइट? उस मॉक टेस्ट फिर नंबर नहीं आते एंड फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि अब तो कुछ होगा नहीं। एंड 2 साल से जो भी पढ़ा था या नहीं भी पढ़ा है तो ख़राब हो जाता है, पेरेंट्स से भी प्रेशर रहता है कि नहीं होगा सिलेक्शन, एंड इस तरह में बहुत गलत स्टेप्स भी ले लेते हैं, परेशान रहता है क्योंकि एग्ज़ाम ही सब कुछ मान लेते हैं। तो हाउ ऑफन डिड यू थिंक अबाउट एग्ज़ाम कि इट्स लाइक ऑलमोस्ट अबाउट एग्ज़ाम कि आई हैव टू स्कोर गुड, आई हैव टू गेट गुड रैंक? हाउ ऑफन डिड यू थिंक अबाउट दिस एंड वाज दिस इवन such a big thing in your head? Okay, first thing, I used to think the same way, like exam is everything. I used to study. I don't know. I don't think I did anything apart from studying especially in 12th, because I was very focused on writing the exams and scoring good rank. But you just have to realize that this is not the end to anything. Like even if you qualify or if you don't qualify, you have to work hard in life. Like anyways. लाइक अगर AR1 भी मुझे मिल गया तो उसके बाद मतलब जर्नी ख़त्म नहीं, उसके बाद भी पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा. तो इवन इफ़ यू डोंट गेट सेलेक्टेड, just use it as a motivation to study more and prepare better for the next time. अच्छा, जब CMI पहुँचे, तुम तो AIR1 थे, सभी लोग टॉपर रहे होंगे? तो वहाँ पे तो ओलंपियाड वाले भी आते हैं, मैथ्स ओलंपियाड वाले भी आते हैं. हाउ स्मार्ट वर योर कलीग्स? एनी स्टोरीज दैट यू कैन शेयर? Okay, I can say like one thing, because I took 1 semester leave. Many of my classmates are now in abroad. 2 of my classmates are in MIT. One doing PhD in Maths, one doing PhD in Computer Science. So that's more than enough example, I guess. So that's the level of competition that is there just because you took 1 semester of gap? No, not because I mean it's the very, like in CMI you will find a lot of people who like Maths, who are very good in Maths, because CMI and IISc are the prime institutes for Maths in India. So the competition is obviously high. Okay. 2 of them are in MIT. Where are rest of them? Can you name the institutes? Like there are a lot of people people doing PhD in abroad, in US, and if you talk about Europe. Which universities? Exactly, I don't know. Princeton, Yale. I think like some of these people got selected into Princeton and they rejected Princeton for other institutes. So Europe, in France, there are a lot of people doing their masters in France. What are generally the stipends per month that they get? $3,000-4,000? I'm not exactly sure about the amounts. You didn't apply for PhD abroad? No, I didn't apply. Why? I first wanted to like one thing about doing a PhD is that you have to be sure about the topic you're doing PhD in. Just can't go to a like PhD then and later decide on the topic. So it's better if you have very clear idea of what you want to do in PhD. And then only one should do PhD also. Yeah, so I wanted to explore the topics in Maths and finally decide. How did you explore? What did you finally decide? No, I haven't decided. That's why I wanted to do a master's in India at least. You're not continuing masters at CMI. You have the option. There you have an option, like if you have a 9+ CGPA. Otherwise, you have to go through the same entrance exam procedure. What is the exam? Same MSc entrance exam for CMI. Yeah. Okay. How much is the stress at CMI? Okay, like first of all, it depends upon people to people, but still in CMI you will see people who are always in library. So you have that culture, like it's more like a studying culture. I think in IISER you will be a lot of free type culture, right? You have a lot of festivals, and also CMI is like purely concentrated on study type of college. We have some activities, and also we have a football ground, we have a volleyball court, a small gym, like very small compared to other institutes. So yeah, majorly the thing is the studying is the main thing in CMI. So how many hours does someone study at CMI? Okay, depends 24 upon hours? No, I mean depends upon people. I told you, like some people just sleep in the library itself. So I mean I'm that kind of. Is there no other life? Why? No idea. I like that.
Maybe I have no idea. Like before joining CMI, I was like that kind of a person. Not like studying 15 hours or something, but I was only thinking about studying. But after going to CMI, like you have to enjoy some life too, right? Correct. It's not just about studying and not taking care of one's health by disrupting the sleep schedule and all. But the way you told all the things, it feels like the culture of CMI is to just study day and Yeah. night, sleep in library. Yeah. There are so many assignments, the exams, and does someone fail also in the exams and all? How tough are the exam? There are stories. Okay, the like course exams, it won't be that tough, so that like it's very difficult. It's very difficult to pass. But if you just attend the classes and follow the course very well, if you can get a decent grade. Is it mandatory percentage of attendance? There is no as such mandatory percentage, but Everyone does no, classes. like the professors could keep some attendance requirements, which don't depend on courses. But I think everyone goes to class. Nobody bunks. Some people do bunk. Okay. Yeah, it depends upon, again, if the professor keep there should be a like 70% attendance, then more people will attend. It's definitely recommended to attend the lecture at least. Like even if you this is my standpoint, if you even if you don't understand everything from the lecture, you will be in track with what's going on in the lecture. You can later on study that topic. You made any girlfriends there? No, Why? I mean, I never tried to Time? make. Yeah, no, time was one of the issue, and I never tried to make. Man, even the girls were studying there, right? Even Yeah, and there are only very few. Okay, so they were already paired with. I don't know about those things. I don't inquire about those things. I was like fully focused on whatever I can do my But best. did you see any couples there? Yeah, of course. Of course, right? Okay. What is your rank in the exams that you're giving for masters? For Which for exams have you given? JAM? JAM I have given. Then I gave TFR and NBHM. I couldn't qualify both of them. TFR was in December, so my preparation, I didn't complete the preparation well enough. NBHM, I missed the cutoff by 2 marks. JAM, as of now, I'm expecting a very good rank. Okay, It went really well. nice. When is the result getting announced? I think around March 20th. Okay, just 20 days. And your dream is to get IISc. Yeah. Today we visited IISc. How was your experience first time visit at IISc? It's a very huge campus, so you have to walk a lot. That was the first. Okay, in CMI, obviously it's a 5-acre campus. CMI, so everything was very nearby. 80 times. This is 400 acres, 80 right? times. So yeah, so I definitely have to bicycle. I have to buy a bicycle if I can get admission here. And yeah, I couldn't explore all of the IISc today because, of course, it's a very huge campus, and it was a very beautiful campus as far as I saw today. Is CMI beautiful? It depends upon, I mean, whatever they could have done, they have done very well. Planted trees and made beautiful everything with the 5 acres price. Yes, it's a very beautiful campus. What would you say to the aspiring CMI aspirants or ISI aspirants? Let me reframe the question. Aspiring aspirants. That does not make any sense. What is your message to the students who are aspiring to join ISI and CMI? Okay, ISI and CMI. First of all, don't come to ISI or CMI if you if you want a job after BSc itself. It's not like any engineering degree. You won't have any placement if you won't get any job as such after ISI. After bachelor's course. But what are the future prospects of obviously there are very good prospects, right? After bachelor's, you can continue in academia itself. Yeah, you can do masters, PhD, and the PhD so on. Or some people, like after bachelor's in like maths and physics or maths and computer science, switch to data science, MSc data science. We have a course on data science masters. Some people take masters in computer science there itself. A lot of times, bachelor students completely leave science and go to civil services preparation. Does that happen at CMI? I think very few cases of that happening. Rare. Yeah, very rare. Right.
because obviously the students who went there are very passionate about the Yeah, subject sorry. itself. Right. Have you decided on the topic for masters or PhD in case you do that? So like broadly speaking, I told you I am interested in algebra and number theory. So I wanted to explore more areas of algebra and number theory, so that I can decide in the future. As of now, yeah, broadly speaking, this is. There are a lot of students on our channel who are planning not to go for engineering as well as medicine. They want to pursue research, right? Most of them are interested in physics, then biology, some in chemistry and maths. Uh, what is your message for future researchers of India? Okay. If you have already decided you have wanted to do research, first of all, it's a very long journey. It's not like, okay, after doing engineering, you might get a job after 4 years. But if you're into research, like even just get completing the PhD will take you a total of from BSc, you'll take 10 years of time. Then after PhD, a lot of people do postdocs, even multiple postdocs, so maybe 2-3 years more. So it's a very long journey. That's one thing you must realize. So if you want a job very soon, then you might have to switch in between, switch to some, as I told you, like some people take masters in computer science or data science to get a job afterwards. Okay. I think this is it. We have mostly asked all the questions that are possible. Anything from your side? Do you want to ask me something? No? You didn't expect that I'll tell you, tell you to ask me. Hi, you can ask, man. This is your chance. Okay. Can you share? What should I ask? Now I am nervous. Can you share your journey from how you built SciAstra and how big it became? And How we built SciAstra. yeah, So SciAstra was an accident, you can say. I wanted to guide students to prepare for, not to. So SciAstra, you can say, is an accident. I wanted to make students aware about the other exams than JEE and NEET. And I started a YouTube channel. A lot of students started reaching out to us. The videos were very helpful. They even went viral. Then students requested us to launch batches. Then you joined. Many other students joined. Initially, we just had 50 students, and you got All India Rank 1, and many other students got selected in IISER Pune, uh, and so on. And since then, more students started coming to us, and yeah, it started becoming big because of all of you. We didn't do much. We're just following our passion. Finally, I had a decision to make, whether to pursue PhD, whether to do research myself, take a job, because I had a lot of financial pressure from family side, and pursue SciAstra, the riskiest option, pursuing a startup. Um, but I wanted to do this. I saw a lot of potential, so I went full time, full on this. anyway, you're doing a good job right now with. Thank you, sir. Yeah. Thank you. I'm doing You're good. doing a good job. At least even if you like, you didn't become a scientist, but you are guiding a lot of people to become. I future wanted to. scientists. I didn't have very. I would say I was very passionate. I went to NIISER for physics. Yeah. I wanted to become like Iron Man, Tony Stark, invent a new energy source, right? But then physics at NIISER was very difficult. A lot of maths in it, which I didn't like much. I like visualizing things. I like experimenting. So I took chemistry. I didn't have biology. Then I explored every possible option in material chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, biology, electives I took. I was very passionate about research. Almost I was final. I'll do PhD. That too abroad, not in India. Then I met a few professors. Some of my research experience was not so good, and since I had more options, so when I have more options, obviously I can choose the better ones, best ones that suit me, right? So that's how I choose. Any other question? What are your future plans regarding SciAstra? Like I recently heard that you have you have an offline campus in Noida right now. What's your future plans? It's the offline office, you can say. First time we were totally online for 3 years of college. Obviously, it would be online. 1 year we were online. Then we finally set up the office. We wanted our team to come together, and so that we can work harder for the research community of India.
Future plan, I see there have been new coachings that have been coming up in India. A lot of them disrupting the price of the courses, a lot of them going from offline to online, online to offline, hybrid modes. But still, I don't feel there is much innovation in education at tech space. It's again the same teacher student model, selling the courses, getting selections. I really hate something which is the ranks system. Honestly, you got all India rank one. We are also very happy in interviewing you. But I personally hate evaluating students on marks on the basis of ranks, because there can only be one all India rank, right? Of course, yeah. But we do not need one scientist. We need hundreds of scientists. And as you are pursuing bachelor's, master's, and PhD, you will realize that it's all about the collaboration. We don't compete after getting into college. We start collaborating. So why teach so much competition in the process? Exactly, yeah. Right? It's literally cutthroat competition. A lot of students even see other students as enemy. That if You shouldn't do he is studying more, then he will get better marks and I'll not get. Right? Like I believe that the only evaluation you should do is like where you started and how much have you improved. That's the only evaluation you should do for yourself. But the system of evaluation is as such, the ranks and marks, that unfortunately parents pressurize their kids. Coaching institutes use this fear to sell the courses and earn money. Students have no other option but to compete for limited number of seats. There is a huge role of government in this. We need more colleges. At least there should be more seats. So if there are more seats, more students can fit in. Competition would become a bit easy and decrease. And at the end, we need a innovation where studying becomes fun. So that is something I'm aspiring for. I'm not sure how I will do that. There is no such thing. Otherwise, it would have already been implemented, and it's a very hard thing to do. But Studying should be fun. It should be like a should video have some game, right? seriousness also. It shouldn't be just fun. You should have some seriousness. Obviously, I feel seriousness is intrinsic. It comes from within the students. Neither a teacher nor a parent or anybody can force someone to study. Right? Our job, external factors job, is to make it easy and fun. The seriousness should be from within. That's why I told you, just don't make any schedule and try to stick to it. Correct. Just study whenever you feel motivated, and you should feel motivated very often. And there will be no complaints of burnout and all that. Yeah. Otherwise, you will burn out Yes. after following to a strict schedule. I love talking to you, man. After so many years, we are finally meeting. He was on our first online batch. We had never seen his face. Right? A lot of times when we go to NIISER and CBS and IISERs, a lot of students recognize us. Like today it happened, right? One of the students came on road and said, "Hey, you're Vivek, right, from SciAstra." So students know us because they see our faces. We don't know them. I'm very happy to talk to you, and we are anyway in touch. In future also, if you need for internships, any other help from our side, we'll be very happy to do, and we'll keep visiting IISc. I hope you get selected at IISc Bangalore. Thank you. All the best, man, and all the best to the students watching this. We are coming up with more of such kind of podcasts and videos, bringing in the experiences from rankers like All India Rank 1, Adarsh. One of the reasons being for you to not fear of something, not fear or get afraid that you'll not get selection. If you learn from someone like Adarsh, if you listen to him, you will realize ki he did what he loved. The rank was a byproduct. Yeah. Right? Yes. You never thought you will get All India Never. Rank 1, right? I just wanted to get selected to IISER Pune, like because that's the prime IISER. Like at that time there was no selection to IISc through IIT channel. Yes. It was really great talking to you, Adarsh. I hope our viewers, parents, students, teachers saw some value in this podcast. We are going to bring more of such podcasts in future, especially with selections like others, so that you get to see it's not always about the competition, the rank and selections. You get to see their perspective, how others never thought about getting All India Rank 1. He did what he loved, how you should approach research. It's a long game, not a short-term game. What are the difficulties he faced at CMI during his preparation that most of you must have related with, how you can tackle this. And honestly, I resonated a lot with him.
think less about the competition and more about the subject and the topic that you're interested in. Follow your passion and dream. Selections marks are all the byproducts, and even after you qualify the exam, as others shared, it's very competitive even in the institutes, right? And it's not the end journey. Whether you get the institutes or not, it's a long game, right? You can anyway go for masters, and now he's probably, hopefully he will get IISc Bangalore for his masters that he's dreaming for, right? So he didn't go to IISc Bangalore for bachelors, which most of you are dreaming of, but he is going for masters now, right? Yeah, you have the chance, opportunity through the IIT channel. So utilize it and try to get Correct. into Now, IISc. now you have a chance through IISER Aptitude test, Yeah. which others didn't have, right? And you have preparation from SciAstra, which we were so young, and he was in our first batch. Even we were not so ready, and we never thought we will have All India rank 1, right? So I hope this was helpful to you. See you in the next podcast. Jai Hind. Thank you, Adarsh, for coming. Thank you.